Very good morning, dear students. Right, welcome to once again welcome to my YouTube channel, that is Gurukul Academy of Chemistry by Sanjay Roy. Please subscribe my channel and also refer to your friends, your relatives to subscribe my channel. If you like my video, please like it, or you can also comment. कमेंट कोई नहीं कर रहा है यार, कमेंट करो कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, राइट? मुझे जानना है ये सब चीजें, right? So in last class we can finish about method of preparation of alcohol and phenol. Now today we can discuss about physical properties of alcohol, phenol and ether. Now physical property means what is the nature of state, which state it can be live, either Maharashtra, Gujarat, Goa, no beta. Either it can present in solid state, it can present in liquid state, or it can present in gaseous state. वो हमको यहाँ पे जानना है, right? Now उसके बाद उसका solubility क्या है, उसका melting point, boiling point क्या है, right? ये सब भी हमको यहाँ पे जानना है. उसके बाद intermolecular force कौन से, either it consists of हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल इंटरेक्शन और वैन डर वाल फोर्स, ये सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होता है. एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है, बट पूछ लिया तो हमको उसका आंसर करते हैं आना चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. ये टॉपिक को हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे, बिकॉज इसमें समझाने के लिए उतना कुछ है नहीं है, राइट? So let's start with our first slide, that is physical properties of alcohol and phenol. So when you explain the physical property, you should be mention their state. First, you can see the first slide. First one, you can see lower alcohol. Lower means it consists of 2, 3, 4 carbon, are colorless, toxic liquid having alcoholic odor. Colorless रहता है means it does not having color. Toxic means when you consume it can adversely affect, right? And it can present in the form of liquid, means alcohol are always present either in the form of solid or liquid. It cannot be present in the form of gas. Second, higher alcohols are solid and odorless. Higher alcohol क्या रहते हैं, solid, और उसमें कोई भी smell नहीं रहता. Phenol is a colorless, toxic, low melting solid having carbolic or phenolic odor, right? तो phenol की अगर हम लोग बात करते हैं तो it is colorless, toxic, low melting solid having carbolic or phenolic odor. Phenolic एक टाइप का ऑर्डर होता है, उस टाइप का ऑर्डर होता है, और it also consists of carbolic odor. Next, nature of intermolecular forces. So here we can see in phenol and alcohol, hydroxy group is a functional group, and we know that there is a large electronegativity difference between oxygen and hydrogen, and that's why due to that its nature is polar, and that's why alcohol is a polar in nature due to presence of OH group. There is a large electronegative difference between carbon, oxygen and hydrogen, and due to that strong polar nature, alcohol and phenol can form hydrogen bonding. It can form hydrogen bonding with itself, or it can form hydrogen bonding with the water molecule. इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा. So अगर मैं कोई अल्कोहल को ड्रॉ करता हूँ ROH, now suppose यहाँ पे मैंने क्या ले लिया CH3. We just take example of CH3. Now here you just focus on this bond. We know that oxygen is a highly electronegative element. That's why the electron density will be shifted on oxygen. That's why oxygen acquire negative, hydrogen acquire positive. Now any molecule which having negative and positive charge are called as polar, and that's why alcohol is a polar in nature. Now same is with phenol also. Here it consists of OH. Here also O minus H plus, so this bond also polar. We can see CO bond. ये भी bond कौन सा है तुम्हारा, polar, because there is also electronic difference between oxygen and carbon. And due to that polar in nature, it can form strong dipole-dipole interaction and
If strong dipole-dipole interaction, if it is happen between hydrogen and oxygen, hydrogen and nitrogen, and hydrogen and fluorine, that bond is called as bond बोलते हैं hydrogen bonding. So hydrogen bonding is a special case of dipole-dipole interaction. Let's see here. We just take two alcohol molecule. Now this is the first alcohol. Here oxygen negative, hydrogen positive. Second alcohol, hydrogen positive, oxygen negative. So it is a one dipole, and this is also another dipole. And the oxygen atom of this molecule can be form attraction between hydrogen of this molecule, and in between them there is a dotted line. This dotted line are nothing but hydrogen bonding. Means it consists of hydrogen bonding. Now you just take the example of phenol also. If we consider two phenol molecules, this is the first phenol, and here we just take the second phenol molecule. Here negative, positive, positive, negative. हम लोग यहाँ पार्शियल चार्ज भी दे सकते हैं. Right? Here also it is called as hydrogen bonding. Now, alcohol also form hydrogen bonding with water. Suppose the structure of water. Here, partial positive, partial negative, partial negative, partial positive. Here there is a presence of hydrogen bonding. Means alcohol and phenol can form hydrogen bonding with itself, as well as it can form hydrogen bonding with water molecule. So we can say that the intermolecular forces present in a hydrogen, present in a alcohol is hydrogen bonding. इसमें क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड. बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मींस व्हाट? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट का? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जब वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? तब वो लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर सिंपल भाषा में बोले, बॉइलिंग मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. That is called as boiling point. वो छोटे क्लास का डेफिनेशन हो गया. वेपर प्रेशर हम लोग जब सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उस चैप्टर में दिया हुआ है. वेपर प्रेशर मतलब द प्रेशर exerted by the vapors on a liquid surface in a closed container is called as vapor pressure. Right? तो boiling point हमको यहाँ पे देखना है. तो boiling point मतलब क्या होता है? The temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. Right? Now the boiling point depends on two factors. First one is उसमें कौन से टाइप का तुम्हारा इंटरेक्शन है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंटरेक्शन स्ट्रांग है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, थोड़ा कम रहेगा. वंडर वॉल फोर्स है तो उससे क्या रहेगा? कम रहेगा. Now we know that in alcohol and phenol the hydrogen bonding are present, and that's why it having higher melting and boiling point compared to the other functional group. ठीक है, तो alcohol having higher melting and boiling point compared to aldehyde, ketone, right, nitro compound, hydrocarbons, but it having less melting and boiling point compared to carboxylic acid, because carboxylic acid consists of strong hydrogen bonding compared to phenol. Then it also depends on the molecular mass. Means as number of carbon atom increases, the surface area increases, which increase melting and boiling point. So we can say that as molecular mass or the number of carbon atom increases, boiling point increases. Next, if the molecular formula are same and if branching increases, melting and boiling point obviously decreases because surface area decreases. इस point को हम लोग explain करते हैं थोड़ा. Let's see these three examples. It consists of, all this group consists of OH group, means सब में hydrogen bonding है. Then हम लोग decide कैसे करेंगे कि किसका melting and boiling point ज्यादा है, right? तो यहाँ पे इसका molecular mass
एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। यहाँ पे इसका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, साथ में क्या हो रहा है देखो, सरफेस एरिया आल्सो इंक्रीजेस। नाउ वी नो दैट द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, or sorry, we know that the we can say that van der Waals force depends on the surface area. As surface area increases, van der Waals force increases, right? So from left to right, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, all having hydrogen bonding, but along with the hydrogen bonding, it also consists of van der Waals force due to presence of non-polar hydrocarbon part. So as surface area increases, van der Waals force increases, and if van der Waals force increases, force of attraction increases. For example, यहाँ पे देखो, अगर मैं ये दो पेन है, तो ये इसका सरफेस एरिया है, अगर इसको मैं अटैच करता हूं तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं रहेगा। बट अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को ये सरफेस से अगर अटैच करता हूं तो इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। मींस एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, intermolecular force increases, that is van der Waals force increases, and if van der Waals force increases, melting and boiling point increases. So यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो from left to right, melting point, or we can say that boiling point increases due to increase surface area, which increase van der Waals force, which increase van der Waals force. Hence boiling point, and along with that melting point increases as number of carbon atom increases. तो ये पॉइंट को ध्यान में रखो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, now here you just take these three examples, first, second and third one. Now what is the similarity? All these three structure having same number of carbon, hydrogen and oxygen, right? सबका मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है। सेकंड पॉइंट, सबके पास अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सबके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सो हियर नाउ एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। जितना ब्रांच बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होगा। अगर मान लो अगर हम लोग एक प्लॉट लिए, उस प्लॉट में घर बना रहे, कोई क्या कर रहा है, 6 रूम का घर नीचे ही फ्लोर पे बना रहा है, मतलब वो प्लॉट का ज्यादा सरफेस एरिया लेगा। अगर कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है, 3 फ्लोर पहले बना रहा है और 3 रूम पहले बना रहा है और उसके ऊपर 3 रूम बना रहा है, तो कंपैरेटिवली फर्स्ट वन वो 3 रूम की जगह कम हो जाएगी। थर्ड पर्सन जो है पहले 2 रूम बना रहा है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम, सेकंड फ्लोर पे 2 रूम, मतलब क्या हो रहा है, वो नीचे का जो जमीन है वो सरफेस एरिया क्या कर रहा है, कम ले रहा है। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा, van der Waals फोर्स डिक्रीज होगा। van der Waals फोर्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर आइसोमेरिक, एक वर्ड याद रखो, फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल, राइट, जिसका फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, दिस वन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हम लोग इधर से इधर आए, इधर से इधर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट याद रखो ना। यहां पर मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, ये अब बताओ सर, अभी इसका रहेगा सबसे ज्यादा, फिर इसका, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग हो रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ ब्रांचिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मींस यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन 5 कार्बन का, एक एक्स्ट्रा CH3, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे कितना है, 7 कार्बन। इस केस में स्ट्रेट चेन सबका सेम है, यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ रहा है। तो ब्रांचिंग क्या, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, बराबर है। 6 रूम का घर एडिशनली 1 रूम बनाओ और
ज्यादा लगेगा, ठीक है, और एक रूम बनाओ ज्यादा लगेगा, राइट। तो एक चीज ध्यान में रखो, सबसे पहला कंसेप्ट क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने के बाद सेकंड कंसेप्ट पे क्या जाना है, उसमें आइसोमेरिक है तो ब्रांचिंग है कि नहीं है, ठीक है, तो ब्रांचिंग है तो उसके अनुसार तुमको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअल ट्रेंड, दिस इज द एक्चुअल melting point and boiling point increases due to increase in surface area, राइट। तो इस तरीके से तुमको एग्जांपल सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर ब्रांचिंग को नहीं देखना। अगर आइसोमेरिक कंसेप्ट है तभी तुमको क्या करना है, ब्रांचिंग पे फोकस करना है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोल्यूबिलिटी। तो वी नो दैट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। यहाँ पे कंसेप्ट लेना है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, तो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, एंड एज आइसोमेरिक अल्कोहल और एज अ ब्रांचिंग इंक्रीजेस solubility increases, right। तो इतना तुमको एक्सप्लेन करना है फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया गया है अल्कोहल का, यू जस्ट रिमेंबर इट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल, यू जस्ट कंपेयर विद दैट, ब्रांचिंग का कंपैरिजन करो, बिकॉज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है तो यू कैन ऑब्जर्व दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सोल्यूबिलिटी पे भी फोकस करो। Once you just go through this slide and if you face any difficulty तो मुझे कॉल कीजिए, मुझे कमेंट पे क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका आंसर तुमको भेज दूंगा। नाउ यहाँ पे फिनॉल की भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, राइट। तो आई होप यू कैन एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमको उसको पढ़ना है, राइट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज गुरुकुल एजुकेशनल एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स भी तुमको दे रहा हूँ आज, तो जस्ट इसको एक बार क्या करो, तुम लोग वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो मुझसे पूछो, राइट। ये क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, अनसॉल्व्ड है, मैंने इसको सॉल्व करके दिया हूँ। जैसे अगर हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर 118 डिग्री, 103 डिग्री, 99 डिग्री सेल्सियस, 82 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली एक्सप्लेन। तो यहाँ पे दोस्तों कंसेप्ट कौन सा लगाना है, एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल। ना यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तुमको क्या लगाना है, ब्रांचिंग का कंसेप्ट लगाना है। देखो यहाँ पे अगर मैंने अरेंज किया हूँ, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे कम कम होते जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज 0.2 ग्राम एंड 1.7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन द डिफरेंस। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या डिफरेंस है? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब क्या रहता है, NO2 ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या रहता है, OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है, पैरानाइट्रोफिनॉल की, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की नहीं है। उसका रीजन क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या फॉर्म करता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दैट इट इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो सोल्यूबिलिटी रहेगा क्या, नहीं। बट पैरानाइट्रोफिनॉल कैन having free OH group and it can form hydrogen bonding with water। ना इसको हम लोग जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। Now let's see, it is orthonitrophenol, it is a paranitrophenol. Now in orthonitrophenol, OH group and NO2 group are very near to each other, because this position is ortho, this position is called as para, and due to that it can form hydrogen bonding between them, that is intra molecular hydrogen bonding, and due to that intramolecular hydrogen bonding the OH group can be engaged with the NO2 group। तो और यहाँ पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लाता हूँ तो
water molecule unable to form hydrogen bonding this OH means यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या रहेगा, सिर्फ weak van der Waals force रहेगा जिसके कारण इसकी solubility कम होता है. बट इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल यहाँ पे NO2 ग्रुप और OH ग्रुप एक दूसरे से काफी दूर है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो द OH ग्रुप आर फ्री. तो जैसे इसके पास क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं कर पा रहा था. दैट्स व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल आर मोर सोल्यूबल कंपेयर्ड टू ऑर्थो. ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैन फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद NO2 group. That's why it is unable to form hydrogen bonding with the water molecule, and hence there is only weak intermolecular force between, that is van der Waals force between orthonitrophenol and water. That's why it is less soluble. But paranitrophenol having hydrogen bonding with the water because it having free OH group, because NO2 group are far away from OH group. That's why it can form intermolecular hydrogen bonding, and hence it can free for water molecule, and it can form hydrogen bonding with water molecule, and hence its solubility increases. Right, I hope you can understand both the question. Right, if you like my video, please subscribe my channel, that is Gurukul Academy of Chemistry by Sanjay Roy. Right, in next class onwards we can study about the केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमको रिएक्शंस मैकेनिज्म पढ़ने हैं, तो तब तक प्लीज इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लास के, प्लीज आप मुझे ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं. राइट, और अगर कोई स्टूडेंट इच्छा रखते हैं ज्वाइन करने का ऑफलाइन क्लास स्पेशली इन गढ़चिरौली, तो प्लीज कांटेक्ट मी ऑन 7875787759. मेरा कांटेक्ट नंबर है. Right, so you can directly contact me. ठीक है, admissions open for 9th standard, 10th standard, 11th as well as 12th standard. Right, so till then bye bye. कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ.